Hi, this is Abhishek back with another new vlog. Today we will unbox Redmi smartwatch and demonstrate setting up with a Android mobile. Let's see the online buying option. ये स्मार्टवॉच आपको MI के साइट पे भी मिल जाएगा. आप ये फॉलो करें द नेविगेशन टू द पेज. ये रहा आपका स्मार्टवॉच, the one what we will be unboxing and setting up. ये रहा आपका फीचर्स जो स्मार्टफोन में आता है. उसी के साथ इन दिस पोर्टल ऑल्सो यू विल फाइंड बैंड्स. ये रहा आपका लिंक. Here you have all the options जो आप बाद में खरीद के आपके स्मार्टवॉच में फिट कर सकते हैं. तो चलिए आज का अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं. आज हम लोग ब्लैक एंड आइवरी ये दोनों कलर का स्मार्टवॉच देखेंगे विथ ऑल द फीचर्स एंड मोबाइल में कैसे ये सेट होता है. दीज आर द टेक्निकल डिटेल्स एंड द फीचर्स इन शॉर्ट. जब आपको ये बॉक्स मिले मेकिंग श्योर बॉक्स का सब सील्स इंटैक्ट है. तो ब्लैक कलर का स्मार्टवॉच ऐसा कुछ दिखता है आफ्टर अनपैक. तो चलिए अभी आइवरी कलर का भी पैक कर लेते हैं. ओपनिंग अप द बॉक्स और ऐसा कुछ दिखता है आइवरी कलर का स्मार्टवॉच. तो आइवरी कलर के स्मार्टवॉच में ऐसा कुछ लुक एंड फील आपको मिलेगा. और अभी कंपैरिजन साइड बाय साइड ब्लैक के साथ. I am convinced with the build quality in this price range. तो चलिए अभी वो ब्लैक मॉडल के स्मार्टवॉच का अनबॉक्सिंग कंटिन्यू करते हैं. लेट्स ओपन द बॉक्स और देखते हैं अंदर क्या मिलता है. यह रहा चार्जिंग पॉइंट. This is the user manual. This will be useful to know कैसे वो डॉक किया जाएगा स्मार्टवॉच टू द चार्जिंग पॉइंट एंड ऐप इंस्टॉल करने का बार कोड एंड द बेसिक सेटिंग्स ऑफ द बटन्स टू यूज. चलिए इसको साइड में रखते हुए अभी स्मार्टवॉच को बॉक्स से निकाल के देखते हैं. ये रहा ब्लैक स्मार्टवॉच का अपीयरेंस और पीछे की तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑल द सेंसर्स एंड द चार्जिंग पॉइंट्स. तो चलिए अभी इसका प्लास्टिक निकाल देते हैं. प्रोटेक्टिव प्लास्टिक पीसेस आर नाइस. तो ये रहा आपका स्मार्टवॉच विद अ ग्लॉसी स्क्रीन. It comes with a single multifunction button. अभी with the long press you can switch on. ये रहा Redmi का branding and the QR code to install the software. तो अभी आपके मोबाइल के स्कैनर ऐप के साथ आप QR कोड को मोबाइल कैमरा के सामने कुछ इस तरह से पकड़िए so that it can scan the barcode and give the link for the app. Click on go to website and you can click download. This makes sure like safely we go to Xiaomi Wear app and there is no mistake or not going to a different app which might be risky and not the original one. This is a standard way nowadays. Companies are providing the QR code to make sure as a end user हम लोग कोई गलती ना कर ले ऐप इंस्टॉल के दौरान. ऐप इंस्टॉल के बाद ये रहा प्राइवेसी एंड परमिशंस ग्रांट ऑप्शन. प्रेस एग्री और
ये रहा आपका start of the application. Let's click on the start. Basic settings, the region, India, the gender, date of birth. These are necessary because while different mode of the fitness, these will help to judge better and do the proper counting. Height, weight. Now it is all set. It is asking to turn on the location. अगर आप location on रखते हो, then the fitness activity or the outdoor activity what you do, it will be navigating with the GPS. Let's click on profile. यहाँ पे आप देख सकते हो add device, on plus. यहाँ पे आपको model number और digit दिख जाएगा. Now you need to select the device what you have purchased. Allow the connectivity so that it pair. Now pairing is going on. Asking for privacy policy agreement. यहाँ पे आप देख सकते हो connecting, pairing and add account progress is going on. While pairing, allowing the access, it's up to you for the contacts. Now add account is going on. अभी स्मार्टफोन पे you get the option, you click agree. Pairing is done. Now these are the watch face. This is the default one. And you will get a few pre-installed. इसी के साथ you will get update option to install the latest firmware for the smartwatch. So you can see it started updating. It is getting installed from your smartphone to smartwatch. Make sure this time you have the internet connectivity on and stable. You see it is done. अभी आपको दिखेगा the smart watch face is the same. यहाँ पे आप देख सकते हो. Also you can change it. So these are the pre-installed 5 options. And these are the others you can download from net. Let's try to install another one. You click apply and see immediately it reflected in your smartwatch face. In the others you will get new watch faces as and when MI will be updating. So once you download, then it will be in the mobile device stored, so that next time you wanted to apply that, you need not to again download. This is the first time it is downloading and transferring. अभी नया फेस वॉच इज अप्लाइड और आपको वॉच में ये दिख सकता है. So this is the same way you can change. Also matters like कौन सा widget का कौन सा डिस्प्ले आपको पसंद आता है, accordingly you can change. Now let's see the strap. It's comfortable one. इसका प्राइस रेंज देखते हुए the finishing is nice. And in your wrist कुछ ऐसा दिखता है. Make sure the smartwatch आप जब पहने it's not too tight or too loose. Otherwise the fitness readings will not give you a right.
तो यहाँ पे बैक साइड पे आप देख सकते हो ऑल द सेंसर्स। अभी देख लेते हैं हाउ टू फिट द चार्जिंग पॉइंट। स्टिल अपडेट्स आर गोइंग ऑन, बट लेट्स सी, वी कैन कंटिन्यू। तो जस्ट मेक श्योर दिस 2 पिंस जिस तरफ पे है आपका चार्जिंग पॉइंट भी उसी तरफ आप पकड़ो, एंड इट्स लाइक ए केस। तो जस्ट प्रेस इट। ये बैटरी 100% 2 घंटे के चार्ज में हो जाता है। इट लास्ट फॉर 10 days and 10 hours when continuously used in the sports mode. This is one of the good one I have seen. This makes sure कि आपका charging point का cable is not loose or something, so it charge properly. Then you just take it out. यहाँ पे आप देख सकते हो the navigation of the settings. Long press of the button will unlock. There are gesture movements. The navigations are pretty simple. You can see various notification modes. These are the different fitness settings. देखते हैं और कौन सा settings options available है. There is a torch mode, but it's not like a torch what we have in the mobile. It's just the full screen become white. So this is the first menu. Even you have the sound, those options here, along with the mobile notification for the message. This is for the compass. It's asking to calibrate for the first time. Now you can see the compass setting is done. This is the air pressure. ये स्मार्ट वॉच में आपको 11 स्पोर्ट्स मोड्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो there are many features options available in this smartwatch. I feel it's indeed a good deal considering the price range this smartwatch is offered. यहाँ पे आप देख सकते हो current location का weather report. Obviously this is seen from the mobile. ये रहा altitude test on the flight. Option to see the heart rate measure. आज के लिए इतना ही. Hope this will help you to choose आपका next smartwatch. If you find this helpful, please like and subscribe to my channel and click on the bell icon to get the next new vlog notifications. Stay safe and see you soon with another new vlog.